आपका पर्सनल ट्रेनर के साथ जो एक इंटरेक्शन होता है वो एक बड़ा खूबसूरत और बड़ा मुख्तलिफ किस्म का होता है. सो आई फेल इनटू अ ड्रग हैबिट बैक इन 2009 to 2010. I started coughing and I coughed up a little bit of blood. That is when I realized that this is going to ruin me. 6 months after joining the gym for the first time in my life, I was actually up on stage and I won that show. Bodybuilding is not necessarily being a fit person. So अगर आप एक on stage bodybuilder का blood report किसी डॉक्टर के आगे रखें तो वो कहेगा ये तो कोई मरने वाला आदमी है. मौला वॉज नॉट उसका ट्रांसफॉर्मेशन ये नहीं था कि आपको you had to come in with a six pack. Fawad bhai used to work out before, but when he came over and he met me for the first time, he had not been training a while. क्यों steroid ही क्यों है? चाय क्यों नहीं है? नस्वार क्यों नहीं है? चरस क्यों नहीं है? एडिक्शन में घूम फिर के सारे आते हैं steroids के ऊपर. Assalamu alaikum everyone, welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by ProPakistani. Today we have a special guest, a pioneer from the health industry and a transformational specialist, Hassaan Mahmood. Thank you very much for being on the podcast. Thank you for having me. How are you doing? Good yaar, how are you? I'm good, alhamdulillah. अच्छा यार, I wanted to ask and start with this. मैं आपको अभी पहले भी बता रहा था कि why do trainers cost so much money? क्योंकि ये मैंने बड़ा सोचा है. मतलब आजकल आप देखें 50,000 रुपए का ट्रेनर, 60,000, 70,000 लोगों की यहाँ पे तनख्वाह 50, 60, 70,000 है, तो ट्रेनर को सारे पैसे दे देंगे तो बेचारे क्या करेंगे? I mean, most Pakistanis don't have the money. That's absolutely, that's a very valid point. लेकिन the thing is कि अगर हम लोग बात करें, overall fitness is one thing, bodybuilding is another thing. Okay. And there are multiple dimensions to it. So depends which one you want to. अगर एक general fitness करना है तो आपको trainers हर range में मिल जाते हैं. And I'm not saying this because I'm a trainer myself. But if you have a specific look to go for, which obviously requires the right amount of knowledge that is to be transferred to you, the right nutrition, that is going to cost you. और रही बात trainers की फ़ी की, जिस तरह हमने पहले भी बात की कि trainers की जो फ़ी होती है वो एक तो experience के हिसाब से if they're charging, I would want to hand over my body to a trainer who is qualified to handle it. How do you judge that qualification? Through experience. Straight and simple. So if I wouldn't even say certifications because I have, over the course of the last 12, 13 years since I've been in the industry, I have seen trainers इनकी बहुत सी qualifications है. But that does not necessarily qualify you as an experienced trainer. Experience comes with trials and errors and blunders and all of that. हाँ, क्योंकि मैं ये कहने वाला था कि is it basically, do you go for someone who looks like, for example, like you, does the person have to be fit themselves? Does the person have to have qualifications? It's confusing, right? It's kind of like absolutely sports management as well. So how exactly do you decide which one to go for? So if you think, or if anybody thinks कि जो सिर्फ buff है या जिसकी अपनी shape अच्छी है, अच्छा trainer है, absolutely not. What you need to look for is the trainer's record, right? उसके कैंप में से transformations कितनी निकली हैं. That is the true identity. If his Instagram page is full of his own pictures, you have a glitch over there. Yeah, because if they are uploading transformations, client testimonials, that is the one you should be looking out for. And a good word of mouth gets you anywhere. तो अगर आपका काम अच्छा है तो मुल्क में क्या, मुल्क से बाहर भी लोग आपको पहचान लेते हैं. और for example, जो आपने कहा था कि what different body types you're going for, etc. What does that mean? Could you explain that a little bit more? Absolutely. For like layman like me? See, if your goal is to bulk up and you have this particular image in your mind to look a particular way. Let's say, you're inspired by an actor, an athlete or anybody. उस goal तक पहुँचने के लिए you need the right tools, right? Without that, you cannot reach there. And the number one tool you need is the right guidance. ये मजाक नहीं है शान भाई, you're handing your body over to somebody and you're trusting them blindly. One wrong move, one wrong jerk, one wrong angle, one breathing technique goes haywire. You are fully exposed to an injury which you could pretty much carry on for the rest of your life. हाँ, जिस तरह lot of people, मतलब मेरे दोस्त हैं जो जिम जाते थे, मैं खैर इतना जिम नहीं गया, लेकिन जो मेरे दोस्त जाते थे वो यही कहते थे कि किसी ने अपनी बैक पुल कर दी, अभी तक उसके मसले चले, स्लिप डिस्क हो गया, कुछ इस तरह हो गया. And that's, slip disc cannot be cured. Yes. The only thing you can do is you can manage it to a negligible level, लेकिन slip disc को आप पकड़ के वापस जगह पे नहीं घुसाड़ सकते. So, it's something you pretty much have to live for with the rest of your life. And in terms of you said that, you have a different look, etc. How much of this is physical, like how much of it is diet, how much of it is physical, and how much of it is mental? Like how much do you, psychological impacts इसके कितने high होते हैं? मतलब think of it this way. I want a lot of particular percentage to it. काफ़ी trainers हैं, काफ़ी लोग हैं जो 30% this, 40% that. It all has to go hand in hand. If you're training hard and you don't have the right nutrition,
it won't give you the results that you want. So you have basically you have a list of check boxes जिसमें rest आता है, recovery आता है, the psychological aspect, peace of mind is there, the right nutrition, supplementation, the right blood work, the right guidance, the smart training, everything has to be checked in order for you to reach the goal that you have in your mind. Right? So coming back to your earlier question about why do trainers charge so much? See, doctors, आपको भी पता है कि doctors वो भी होते हैं जो मार्केट में बैठे हैं 200 रुपये पे आपको चेक करें, दवाई लिख के आपको दे देते हैं, और डॉक्टर्स वो भी हैं जो 6 महीने आपको उनकी अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, एंड दे माइट प्रॉबेबली बी द स्पेशलिस्ट ऑफ द सेम फील्ड. So experience will determine, the likely outcome of what you want to achieve. So आपका सवाल बहुत अच्छा था कि ट्रेनर आप डिसाइड कैसे करें. क्या आप सिर्फ फिजिक देख के उसके पास जाओ? Absolutely not. Maybe the top trainers in the industry are probably, अगर हम अमेरिका की बात करें, चार्ल्स ग्लास एक बहुत बड़ा नाम है, वो बुजुर्ग आदमी है. I think he must be nearing around 65 or 67 years of age. तो इतने उसने अपने प्राइम में जो करना था उसने कर लिया. Now उसके पास लोग क्यों जाते हैं? उसकी एक्सपीरियंस और नॉलेज की वजह से. माइंड. So if you want to decide which trainer you go to, number 1, qualification मैं फिर भी चलो मैं सेकेंडरी पे रख देता हूँ. It is the experience. Number 2, उसके कैंप से ट्रांसफॉर्मेशंस कितने निकले, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है. Or is it like a chemistry thing as well? So, for example, you know how certain footballers play better with certain football coaches? Absolutely. That is such a lovely point. आप selective हैं? See, you need to, the word personal in a trainer has a great value, and, it's there for a very particular reason. आपका पर्सनल ट्रेनर के साथ जो एक इंटरेक्शन होता है वो एक बड़ा खूबसूरत और बड़ा मुख्तलिफ किस्म का होता है. सी द वर्ल्ड सीज यू एट योर बेस्ट. वी आर सिटिंग हियर, वी आर ड्रेस्ड अप, वी आर सिटिंग इन एयर कंडीशनड एनवायरनमेंट, एवरीथिंग's गुड, राइट? वी स्मेल गुड, वी लुक गुड. जब आप ट्रेनिंग कर रहे होते हो द ट्रेनर लुक्स एट यू एंड ही सीज यू एट योर वर्स्ट. यू आर स्वेटिंग, your blood sugar's all over the place, you're panting and you're out of breath and all of that. Yet the only relationship, the only person in your life जो आपको कहता है कि येस यू कैन डू इट इज़ योर ट्रेनर. मैं मनी हाइस्ट की वो दिखाते हैं ना बिहाइंड द सीन्स, तो उसमें एक बहुत छोटा सा सीन था, वो कोई एक्ट्रेस है, शी हैड टू क्रॉल थ्रू अ टनल. आई थिंक इट वाज अ 4 or 5 सेकंड सीन. तो उसका बिल्डअप उन्होंने जब दिखाया कि मेरा जो ट्रेनर है उसको मैंने कहा मैंने ये टनल सीन में क्रॉल करना है, तो मुझे बहुत प्रोफेशनल लगना है. कहती वी ट्रेन फॉर इट. एंड जो उन्होंने एंड पे एक बात की जो मुझे बहुत अच्छी लगी, कहती मेरा ट्रेनर इज़ द ओनली पर्सन अमॉन्ग ऑल द पीपल आई मीट थ्रू आउट द डे who pushes me and motivates me. Your boss is not going to come to you, or not every boss चलें, अच्छे भी होते होंगे. Exactly. So a trainer every day in and out, वो आपको आपके अच्छे मूड में भी देखता है, आपके बुरे मूड में भी देखता है. Like if my client comes to the gym and I feel like there's something off with my client, I won't necessarily start the session right away. I'll sit down with him or her, have a cup of coffee, have a smoke, have a drink, anything. Sit down with them, talk to them. जब तक वो मेंटली रिलैक्स नहीं होते, और बात करने से इट्स नॉट नेसेसरी कि उनकी जो तकलीफ है या परेशानी आप उसका हल निकाल दो, लेकिन जस्ट हेयरिंग देम आउट विल दैट्स अ प्रॉब्लम. शायन भाई, कितने लोग आजकल आपकी सुनते हैं, कितने सुनने वाले? ट्रेनर आपको सुनता है, आपको समझता है, आपकी साइकोलॉजी को समझता है. आई नो ऑल ऑफ माई क्लाइंट्स इन साइड आउट. द वे दे ट्रेन, आई कैन जज देयर पर्सनैलिटीज इन एन इंस्टेंट. मुझे पता होता है कि कितने वेट से कौन थक जाएगा, कितना कोई कर सकता है और ये जान के नहीं कर रहा. सो इट्स लाइक एन ओपन बुक. यू नीड टू यू कलेक्ट डेटा ऑफ द क्लाइंट एज यू ट्रेनिंग, नॉट जस्ट फिजिकल डेटा, personality traits, characteristics, their strengths, their weaknesses. It's like an open book. You collect that data of them and then you design the best course of action कि किस क्लाइंट को किस तरह से लेके चलना. मैं जो आप बात कर रहे हैं ना अबाउट सॉर्ट ऑफ ओपनिंग अप एक्सेट्रा, मेरा experiences with trainers में मसला actually reverse है. And I think this comes, and I'll come back to this about motivation, but I joined a gym in London, for example, and I had a personal trainer. He was actually a really good trainer, relatively. उसकी वो certifications भी अच्छी थी, बाकी सारी चीज़ें भी अच्छा था. खैर, the personal trainer ना होता कहते थे when he started pushing me, तो maybe I didn't want to train, वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं क्या करता था कि I would start मुझसे ना गप्पे लगाना शुरू कर देता था कि तुम्हारे बच्चे कैसे हैं, तुम्हारे जो आप कह रहे हैं ना कि you would see. Yeah, that's before the session. Yeah, so I would do it during the session. I'd be like, oh, so अच्छा ये हुआ है, oh, and I'd put down the weights and I'd start talking because I didn't want to train. और मैं वैसे क्या करता था without, and I know I'm paying for this, so I'm stupid doing this. लेकिन मैं ना काम चोरी में इतना आगे था कि मैं 10 सेशन इस तरह निकाल लेता था without really training. And then I realized this is a problem with me and personal trainers where maybe in other parts of life मुझे शायद उस तरह के लोग अच्छे लगे जिनसे मेरी गप्पे लगे. मे बी आई नीड अ ट्रेनर हु इज़ अ हार्ड एस, समवन जो मुझे बोले कि यार चुप करो
और एक्चुअली ट्रेनिंग करो, तुम सिर्फ इधर बातें करने आते हो. और ये मेरा sort of, जो मैं स्पोर्ट्स वगैरह भी बच्चे में खेलता था, so I, फुटबॉल में जो इनिशियल वार्म अप होती है, आई कांट गेट माई सेल्फ टू डू इट. लाइक आई प्ले द गेम बिकॉज आई एम कंपेटिटिव, लेकिन वो वाला जो एलिमेंट है ना, सेल्फ डिसिप्लिन, जीरो. आई जस्ट डोंट हैव इट. एंड मैंने रियलाइज किया विद कोचेज लाइक, सो आई यूज्ड टू प्ले इन अ फुटबॉल अकेडमी एज अ किड माई होल लाइफ. कोचेस को भी ना मैं गेरू कर लेता था बातें करके कि बस मुझे ये वाली चीजें ला कराओ. See, that's your skill though. It might be my skill. This is why you are where you are in in your accomplishments in life. But see, लेकिन ट्रेनिंग में मसला करता है. Let's see if I was your trainer और आप मुझसे वर्कआउट के बीच में पूछते हैं कि how's it going, how's family, how's everything. And if I realize that this is how you're comfortable with, you do not have a problem, chit-chatting in the middle of the workout, I would still make you train, but आपको मैं reps के दौरान गप्पे भी मारता और reps ही पूरे कराता. So you play with the strength of the client, right? I wouldn't ask you to, चुप कर जाओ, अभी site है, ये है, वो है, concentrate. Eventually, yes, I will bring you to that zone, which you will realize yourself. See, if I have a client who's a chain smoker, I don't go up to them and say, yaar, cigarette chhod do. That's dumb, that's stupid. You can't just force an adult to just, quit something just like that. So what you do is you create an environment जिसमें उसको खुद realize होगा कि यार this actually is causing me harm. So you make them realize that. Isn't that a much better way to convince a grown up? And how much of this is on them? मतलब आपने, for example, like, are you selective with your clients or do you just take Absolutely selective. In the beginning of my career, I would take everybody on. ठीक है. Now I'm very particular about my clientele. See, जब आप किसी आर्टिस्ट की पेंटिंग देखते हो, उसके फार राइट कॉर्नर नीचे में आर्टिस्ट अपना एक सिग्नेचर मार्क छोड़ता है. टू मी दैट्स माई क्लाइंट. तो आई विल टेक ऑन अ क्लाइंट जो मेरी एक अच्छी नुमाइंदगी करे. सी, इट्स वर्ड ऑफ माउथ, सब वर्ड ऑफ माउथ. इफ आई ट्रेन समबडी and our tenure comes to an end, they move to another gym or another country, they're training over there, so the people are going to ask them, यार ये टेक्निक और ये सब चीज़ें तुमने कहाँ से सीखी. That's where my markup comes in, doesn't it? So I have to choose a client who is a good reflection of me. And how do you judge that? Do you have like an interview with them? Absolutely. I sit down with them. I take a good hour or so. और उस दौरान मुझे समझ आ जाती है कि whether or not. What do you ask them? Not directly what needs to be asked, but I'll create an environment, a situation जिसमें मुझे अंदाज़ा हो जाता है. Number one thing, just what do you look for? Patience. Number one thing is patience. If they have, they come up to me with a time frame of less than 6 months, I apologize. Why? Because Shayan, this is the human body. It is not a joke. हम लोग जब टीवी पे देखते हैं या एक्टर्स की ट्रांसफॉर्मेशंस देखते हैं, that's done in a very safe, in a very controlled environment. यहाँ पे हमारे पास वो सब resources नहीं है. So if you look at Amir Khan or Christian Bale, यार इन्होंने ऐसा किया, they had a whole panel of experts behind them. Things can go wrong there too. वो भी है, लेकिन so the kids or whoever sees those transformations, they think that this is something which is very easy to achieve. Trust me, it's not. It's not easy to push. See, gym में आप क्या करने आ रहे हो? अगर आप basically gym में आके you're pushing past a pain threshold. Right. How many of us are qualified to do that? हम तो आराम नहीं ढूंढते पूरे दिन में. That's what we like, right? Comfort and luxury. In the gym, there's no comfort, there's no luxury. If the client complains to me about, यार गर्मी है सर बहुत ज़्यादा, तो I say कि यार वो जो बाहर सड़क पे रेडी चला रहा है ना बाबा, पूरा दिन गर्मी में, उसके सर पे छतरी तक नहीं है, गर्मी उसको लगती है. आपको किस चीज़ की गर्मी है? पूरे दिन में 1 घंटा पसीना निकल गया तो बस इतना ही था. तो I won't sugarcoat them or goad them or cuddle them. I need to toughen them up. 1 घंटा पसीना आ गया, so what? And do you think that this is something that's also a level of self-motivation? जिस तरह मैं अगर for example अपना दूँ तो maybe it's me who's not self-motivated in the sense के do they have to get to some sort of a moment in life where they're like हाँ यार अब मैंने ये करना ही करना है? That's another very good question. See, अभी आपने कहा कि आप अभी जो हमारी बात हुई थी, आपने कहा I don't feel the need to train, gym जाना, मुझे मतलब उस तरह से शौक नहीं है. So if you would have come to me और मैं आपसे ये बात सुन लेता कि यार मुझे जिम का शौक ही नहीं है, so I would not push you to do it. Motivation आपको कोई और दे ही नहीं सकता. This is psychologically proven. I cannot motivate you. I might inspire you. You might want to look like a particular athlete or a person or somebody you admire, but they cannot motivate you to do something. वो अंदर से आता है. कैसे आता है? वो पॉजिटिवली आता है. गुड आता तो है, ये मैं आपको इश्योर करता हूँ, चाहे डॉक्टर से आए चाहे खुद आ जाए, लेकिन आता है. बिकॉज गो बैक टू ह्यूमन हिस्ट्री. अल्लाह ने जो हमारा जिस्म डिज़ाइन किया है, डू यू थिंक वी वर डिज़ाइन टू सिट इन एयर कंडीशनड ऑफिसेज एंड स्लीप 12 hours a day, wake up in the afternoon, with no physical activity? Is that how we were designed? Absolutely not. Prehistoric times में चले जाएं, the men
they had to hunt, using bows and arrows, not guns and all. तो कोई अनफिट आदमी उस दिन शिकार कर सकता था. You're fighting nature, right? So you need to have that physical activity about you. That's how the human body was designed. That's what we do to dogs, don't we? We take them out for walks. नहीं कराओगे तो उनको heart diseases हो जाएंगे. So how do you think we are any different? Are we? We are not designed to sit idle and not push our bodies to a particular point. That's not how we were designed. अगर आप nature के design के खिलाफ जाओगे, what do you think happens? Exactly what you're observing around you right now. And when was it in your personal story कि आपको realize हुआ था कि you like going to the gym? Because आप मतलब you came a long time before it was fashionable. अब तो खैर everybody is into the gym or see I came to it from a negative. अभी मैंने आपको बताया ना, एक positive reinforcement होती है, एक negative होती है. अच्छा. Positive reinforcement बेटा homework करो टॉफी मिलेगी, और नेगेटिव बेटा होमवर्क करो नहीं तो मार पड़ेगी. सो आई नेवर एवर, मुझे जिम बड़ी एक इंटिमिडेटिंग जगह लगती थी. मुझे याद है हम आई यूज्ड टू प्ले लॉट. आप जिम शिम नहीं जाते थे? नहीं नॉट एट ऑल. मुझे शौक ही नहीं था. मतलब हमारी मार्केट में जो मैंने पहली बार जिम देखा था, मैं कुछ शायद चीज़ें लेने गया हुआ था, तो मैंने नीचे जब देखा शीशे से, मतलब इतने गुस्से वाले सारे, पसीना आया हुआ है, बिग गाइस, तो इट वाज वेरी इंटिमिडेटिंग टू मी. यार ये क्या है? मुझे तो क्रिकेट पसंद था खेलना. सो हाउ आई केम इनटू इट, it is something I've spoken very openly about, not, in a negative way, but to inspire people who probably might be going through the same thing. Achha. So I fell into a drug habit back in 2009 to 2010, right? And there was a point where I could not, probably pass or go through the night without having some sort of, If you don't mind asking, what drugs were you on? Oh, that's a whole conversation. Let's leave out that detail. आपने कहा था खुल के बात करें यार. वो ज़्यादा खुल के हो जाएगी. चलो ठीक. But it was a very dark phase, a very bad phase. Till one point, it started affecting my training as a cricketer. So I still I wanted to, yeah. अच्छा. मुझे वो दिन आज भी याद है. हमारे शिफा हॉस्पिटल के सामने एक पार्क है. So I usually go there to have a morning jog. So one morning I went to the park, I start jogging, and in the middle of it, I start, I go breathless, I start coughing, and I coughed up a little bit of blood. That is when I realized that this is going to ruin me. ये मुझे ख़त्म कर देगा. And this is the time I need to act. So तौबा कीजिए, बैठे अल्लाह के आगे, तौबा की, माफ़ी मांगी. And then I decided, I have this one life, this one body, I am not going to waste it. And that is where, I brought in a psychiatrist from UAE, डॉक्टर एना. तो उनके साथ जब मैं बैठा, उन्होंने मेरी सारा जब How did you meet her? वो हमारे वालिद साहब की कंपनी में काम करती थी. दुबई पेट्रोलियम में थे मेरे वालिद साहब. अच्छा. So Dr. Anna, when I scheduled an appointment with her, there's no shame in seeking help with the right professional, right? Yeah. I don't know why people hesitate. तो जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझे वो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया आज से 12 साल पहले, जो मैं आज भी लोगों को सिखाने की कोशिश करता हूँ. That was, as we spoke, the behavior modification tool. So she had suggested why don't you try weight training, ये जो आपका aggression है, ये जो आपका withdrawal है, ये सारा कुछ जो है, why don't you divert it to the weights, just give it a try, give it a shot. तो वो उनका मशवरा था. So I joined a gym, not because I wanted to look like, I swear, I never wanted ये bicep हो या उस जैसा दिखना है. Were you fit before you joined the gym? Absolutely, yeah. मतलब from a cardio standpoint, not from a physique. I was a very skinny guy. तो वो cricket में आपको पता है, the bulk does not really matter anymore. उसमें stamina is the real thing. Long distance running and all of that. So when I joined the gym, I just went there on the instruction of my psychiatrist. उसमें मेरा ये कहीं से भी शौक नहीं था कि एक पर्टिकुलर लुक की तरफ जाना है, मैंने उसको देखा है तो मैंने ऐसे फिजिक बनानी है. Never. But once I started it, I realized in the first couple of months that this is the it was either this or either it was a rehab. So I had to make the smarter choice. I did never want to go to a rehab. तो ये जो मैंने I tried my hand on it for 2-3 months, तो वो कहते हैं that sometimes, God chooses a path for you. So that is when I realized that I am now a much relatively calmer person since I was ever before. Were you an angry person growing up? Absolutely. I had anger issues. I had मुझे eating disorders थे, insomnia, you name it. Everything associated with the withdrawals and side effects of being on drugs. I'm no different. Within 2 to 6 months, na sirf I got rid of all of those symptoms, but 6 months after joining the gym for the first time in my life, I was actually up on stage and I won that show. So,
you said you joined this gym. Was there a period जहाँ पे was it like back and forth कि आपसे हो रहा है नहीं हो पा रहा? No. उसमें see the first time I walked in. And did you have a trainer? No, I did not. अच्छा. The first time जब मैं जिम गया और जिम से एक हफ्ता पहले I went over to a friend's house. उसके पास एक उसने 2 सीमेंट के डब्बे एक बारबेल पे लगाए हुए थे. So I brought it over to my house. तो I used to do bench presses. मुझे यही पता था कि जिम जाके इस तरह का एक मूवमेंट होता है. So I used to keep doing it. Then when I realized there's more to it, then I joined the gym. और ऐसा कभी भी नहीं हुआ. I threw up 4 times the first time I trained. मुझे पता ही नहीं था. अगस्त का महीना था, यही बरसात वाला. और बेसमेंट में जिम था और उसकी लाइट भी उस वक्त गई हुई थी. I had no clue, you know. They say the stupid person wins because, you know, they don't know it cannot be done. You know, nobody told them it cannot be done. तो मैं अंदर गया तो जो उधर सर थे उन्होंने मुझे कहा यार ये इंक्लाइन बेंच मशीन है स्मिथ, इसको बस ऐसा मूवमेंट है, ऐसा रैक करना है, ऐसे अनरैक करना है. He did not tell me the number of sets and reps. So I think I overdid it. मुझे reps और sets का पता ही नहीं था. I just thought you keep doing it till you pass out. So I threw up 4 times in my first workout. 4 times I remember very clearly. क्योंकि जब मैं ऊपर जाता था तो वो एक मिल्क शेक वाले स्टॉल था. उन अंकल ने मेरे पे तरस खा के मुझे मिल्क शेक का ग्लास दिया, बनाना शेक का, कि यार बच्चे इससे तो तुम बीमार हो जाओगे. But I still went back. उल्टियाँ कर रहे थे. You didn't. There was no quit. No, not at all. Not at all. It has never been a part of my personality since, you know, as long as I can remember. I was back in there. See, शुरू तो किया 1 session a day से. I gradually moved up to 2 sessions a day. So I used to train early in the morning. अभी जिम खुला भी नहीं होता था, शटर नीचे होता था. I used to wait outside कि सर आ जाएं. हम शटर ऊपर करते थे साथ मिलके. मैं उनकी वैक्यूम क्लीनिंग. How old are you at this time? 31. I started when I was 19. So this is when you were 19. 18 अभी or आप 19. स्कूल यूनिवर्सिटी में थे या? यूनिवर्सिटी अभी शुरू हुई थी. That's where I met Danish. Yes. अच्छा, तो अभी इस टाइम पे आपने यूनिवर्सिटी शुरू हुई थी. यूनिवर्सिटी में सुबह आप जिम पहले जाते थे, शाम को जिम जाते थे? सुबह फजर के बाद 6-7 बजे. अच्छा. सिर्फ जिम खोल के वर्कआउट नहीं करते थे. यू नो वी यूज्ड टू ओपन अप द शटर. मैं पानी भरता था. यू नो नीचे एक वो मोटर थी, हम पानी ऐसे उस्ताद भरते थे, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता था कि बुजुर्ग आदमी इस तरह पानी भरें. तो आई यूज्ड टू टेक ओवर दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी. वो उस्ताद और आप क्लोज हो गए थे? आई गेस वी स्टिल आर क्लोज टू दिस डे. यू आर लिविंग इन दैट जिम. सो या एग्जैक्टली. आई यूज्ड टू गो देयर इन द मॉर्निंग. एंड देखिए ये एक और मिथ है कि हमें लगता है कि हम जिम में बहुत टाइम देते हैं. यू नो आई एम ट्रेनिंग 45 minutes a day, probably 4 or 5 times a week. That's all. That is all. It's just it's the way you train that really matters. It's not the amount of hours you spend in the gym. आपने बोला ना कि आप सुबह को फजर के बाद जाते थे. What is this? Shock, एक आग थी. I had this fire in my belly. I wanted to change and I knew change could not come while staying in your comfort zone. It is impossible. This is something I do not understand why people do not realize. You want results which you do not have. You got to do things which you have never done before. इसमें तो मतलब तो एक understood बात है यार. लोगों को लगता है आप comfort zone में रह के काम कर सकते हो. You want to look or achieve anything. You know, you are sitting where you are in the position you hold is because you sacrificed a lot to be where you are today. Isn't that so? I had to do the same thing and this is physical. See? जब हम पानी भरते थे, I used to help them vacuum the gym and, you know, he used to make me a cup of coffee, light me a cigarette up. तो हमारी उधर से शुरुआती पहला वर्कआउट हम सुबह करते थे. और शाम में मैं फिर आ गया तो उन्होंने मुझे पूछा कि तुम दोबारा क्या लेने आए हो. You know, इतने से तुम हो. I was 48 kgs to be specific. You were 48 kgs. You know, you could. It's actually embarrassing. You know, when I used to take my shirt off, you could actually count my reps. तो कहते तुम क्या लेने आए हो, मतलब इस तरह क्या करने क्या? 48 kgs. I was underweight. Yeah. And I have those pictures up on my Facebook and Instagram, so you know, people don't think I'm exaggerating. तो मैंने वो photos भी रखी हुई हैं. And once again, it is to inspire people who think it cannot be done. तो उधर से शुरू किया. I had that fire, vomiting, cramps, वो ये सब कुछ भी नहीं है यार. क्या हो गया? हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना. Then your body, you know what happens is your body starts fighting back. You give it a stimulus every single day. You know, I ask, you know, somebody to run, sprint. They will sprint. But if I, you know, उनके पीछे मैं 2-4 कुत्ते जोड़ दूँ, जिसको उसको पता है कि अगर मैं रुक गया तो मेरी टांग चबा जाएंगे, तब उसकी स्प्रिंट में और पहली स्प्रिंट में फ़र्क होगा कि नहीं होगा? ज़मीन आसमान का. तो you need to have a stimulus. Body, अल्लाह ने बहुत, human body is very, very smart. Right? So when you throw a particular stimulus to it or you bring it up to a particular environment, it has to adapt. और muscle building क्या है? It is an adaptation to stress. End of story. Summary जो है एक muscle की वो क्या है? It is the adaptation to stress. आप रोज बॉडी पे एक स्ट्रेस डाल रहे हो, so what option does the body have? Is to grow stronger, right? And does that require, for example, मैंने लोगों से, I mean, again, बचपन में आप सुनने में आते हैं ना, तो कोई कहता है यार मेरे पास सिर्फ 2 kg का डम्बल था लेकिन मैं रोज बाइसेप्स लगाता था और अब मेरा बाइसेप इतना बड़ा. Is that even possible? Like from a scientific point of view?
अब मुझे नहीं पता वो बड़ा किसको कह रहे हैं. हाँ, हो सकता है obviously किसी maybe के not लिए as big as 8 इंच yours. बड़ा हो, हाँ. किसी के लिए 20 इंच बड़ा हो. Can you, for example, without going to the gym, free weights, can you train to that level, or is that not possible? If you have the right equipment at home, Or if you have no absolutely. equipment, No. See, no equipment will get you in shape. Calisthenics, but calisthenics कर सकते हैं आप what does that outdoor. mean? Calisthenics is using your own body weight, right? ठीक है, Like ठीक है, push-ups, chin-ups, and समझ गया. burpees and all of that. But in order to have the physique that you require, अगर देखें, that depends on the physique goal we're talking about. If it's lean, sure, it can be done at home. People have done it with just a barbell. अगर आपको bulk करना है, you want to 100 look push-up a day big and all of challenge that, and all that. absolutely. Yeah. So being in shape without going to the gym is very much possible. With body weight exercises, YouTube भरा पड़ा है यार. और पाकिस्तान में ये भी है ना कि पता नहीं, अब मुझे ये अगेन ये ले मैन कह लें terms, ये भी बड़ा कॉमन है कि लेग्स नहीं लिखाता कोई. मतलब मैं जितना नोटिस किया, मैं भी शुरू में नहीं, मैसिव फ्रॉम द टॉप एंड मैं भी शुरू में नहीं लगाता था. मैं भी शुरू में नहीं लगाता था. इज इट अ पाकिस्तान थिंग और वर्ल्ड वाइड थिंग? मैं आपको नहीं, इट्स नॉट जस्ट अ पाकिस्तान थिंग. हमें लगता है कि हमें लगता है नेगेटिविटी पाकिस्तान में, ऐसा नहीं है. आई वाज इन टर्की, आई वाज ट्रेनिंग इस दिस जिम, और उधर भी कोई वेट्स रीरैक नहीं कर रहा था. हम कहते हैं ना पाकिस्तानी वेट वापस, उधर वो बड़े लिखे लोग भी नहीं रखते. यू नो, एवरी कंट्री आई विजिटेड, मैंने शायद ही कोई जिम देखा जिसमें मैंने किसी को वेट्स वापस रखते देखो. पाकिस्तानी एवी बेचारों को बदनाम किया हुआ है, कोई भी वेट्स वापस नहीं रखता. Basically, legs is the biggest muscle group of your body, right? Is it just because मतलब aesthetically appealing कम है? No. The reason is कि जिस वजह से लोग इससे भागते हैं बहुत ज़्यादा, उसकी वजह ये कि जब आप legs train करते हो, so the majority of your blood flow is going to be diverted towards your legs, right? Whatever muscle you're training, blood flow उस area में ज़्यादा जाएगा. तो जब वो इतना बड़े मसल में ज़्यादातर खून आपका जाता है, तो यू एंड अप फीलिंग वेरी लाइट हेडेड एंड नॉशियस एंड ऑल ऑफ दैट. फिर अगले दिन जो उसकी सोरनेस है, उठना बैठना आपका बड़ा मुश्किल हो जाता है, सीढ़ियाँ चढ़ना. विच ओनली इज बाय द वे जो सिर्फ शुरुआती दिनों में होता है. इट्स नॉट कि हर दफ़ा ऐसा होगा. तो अल्लाह का शुक्र है, ऑल ऑफ माई क्लाइंट्स व्हेन आई एक्सप्लेन टू देम द इंपॉर्टेंस ऑफ इट, दे ऑल डू इट नाउ. समझाने वाला अगर गाइडेंस देखें आपकी ठीक हो तो इंसान घर गुजरता है. अगर वैसी शौक के लिए करना है तो फिर तो यार उस पर तो हम किसी को कुछ नहीं कह सकते. वो बेशक now see, the funny thing is Hamza Abbasi ko I was training, so he's quite a character. He's very charming. You were training him for? I trained him for 2 movies. एक परवाज़ है जुनू and The Legend of Maula Jatt. ठीक है. मौला जट का तो अभी ट्रेलर भी निकला है. बिल्कुल बिल्कुल. In that by the way. Hamza Abbasi and I was very happy to see that. कितना टाइम हो गया, अब तो भूल भी गया था. When I saw it again, it was a rush of memories back again. And yeah, it's a great trailer as well. Hamza भाई जो है ना, वो काफी शुगली हैं. He's one of the most charismatic and lovely people you would ever have the fortune, the honor to meet. He's amazing. अच्छा. तो वो पहले दिन जब मुझसे मिले तो मुझे कहते हैं सिर्फ शोल्डर लगाना है मैंने और बाइसेप लगाना है और मैंने कुछ नहीं करना. तो आई रिमेंबर दैट वी हैड अ गुड लाफ अबाउट इट. ऑब्वियसली आई हैड टू डू व्हाट आई हैड टू डू. मैंने इफ आई हैड टू लिसन टू द क्लाइंट dictating me what to do as a trainer, मेरा तो कब का करियर खत्म हो चुका. So how did you get that gig? Like what happened? How did you sort of get into that role? I never got that gig. What happened was कि उमैर जसवाल and I, we are very old friends. We go back a long way. ठीक है. उमैर तब अपने पहले सिंगल पे काम कर रहे थे and I had just won my first show. So, when we sit down now. When you say won your first show, what do you mean? My first bodybuilding competition. अच्छा. Which by the way was not the reason I trained. वो जो gym वाले थे उनकी. See, if you win a competition from a gym, that is the biggest marketing a gym can have. So when they see somebody who can potentially bring them a title, so वो कहते हैं यार लड़ो. We want you to compete. I was never comfortable with it, and but I did it. There's some people you just. Can I ask a question? And we'll come back because obviously Maula Jatt, and I really want to hear that story as well. लेकिन जब आप train कर रहे होते हैं, how different is it? Like I once saw this documentary जिसमें UFC trainers होते हैं right before UFC fighters होते हैं right before a fight. It's like they're losing, I don't know, 5-6 kgs. Water. They're sitting in water, sauna. Yeah. For a bodybuilding competition, can you just give us like the week before, what is it like? See, the first thing is कि आपकी class कौन सी है. So I was under 21, so I had to compete in the junior class. अब junior class में weight categories होती हैं. Weight class A, B और C. ठीक है. So 60 to 65 for example, 65 to 70. So you qualify whatever you're suited for. तो और एक हफ्ता पहले is the toughest part of a show. Just like you mentioned the UFC fight. उनके लिए भी वही challenge होता है और हमारे लिए भी वही होता है. To lose water and to lose it in a way in which you do not have a heart attack, because you are depleting yourself of all electrolytes. It's a very risky phase. That's why I've been against competitive bodybuilding since a long time. मैं हमेशा ही कहता हूँ अपने लिए अच्छा देखो. Every time I upload a picture on my social media, I think 70% comments are, we want to see you compete. So people have
associated competing with having a decent physique, which I do not understand why. I guess it's just human nature, right? I think There's a probably prize fighting competition. The risk, Shanbi, is just too much. Dehydrating yourself, आपकी kidneys exposed हैं, आपके lungs, your liver, all your vital organs, everything we do is, based on the water intake of our body, isn't it? We are 70% water. So how do you reduce the water? Is it like you're in the sauna? What are you doing? There's a whole lot of things you can do. There's water cycling. So basically, एक process होता है in which you drink lots and lots of 3 times or 2 times more water than what you normally do. Achha. So you give your body the signal that I'm drinking so much water. So you start obviously urinating a lot more. Then you stop it. But the body does not understand the signal. तो वो फिर भी urination आप किए जा रहे हो और उतना water intake आपका है नहीं. ये safest तरीन. Isn't it all dangerous? This is the safest methods which I'm telling you about. There's sauna है, steam है, excessive smoking backstage होती है to dehydrate. Smoking, vaping ये आपको dehydrate करती है. अच्छा. Yeah. And then so bodybuilders smoke? A lot of them do. And that See, helps? bodybuilding is not. I'm sorry, a lot of my colleagues are going to probably flip out at me. Bodybuilding is not necessarily being a fit person. एक bodybuilder देख के, he can lift weights probably more than you do, but does not necessarily mean he's healthier than you are. ये एक बहुत बड़ा myth और एक बहुत बड़ा concept है, and I'm surprised people haven't actually figured it out. How stupid can you be to not figure it out? एक massive bodybuilder है, 100-150 किलो का. How exactly is he fit? He used a lot of steroids and peptides and hormones to get where he is. You're saying you can't get to that, जिस तरह ये Arnold Schwarzenegger type of level. You really think Arnold was natural? नहीं मतलब अच्छा मैं आपको हमारी एक और hypocrisy बताता हूँ बड़े मजे की. अभी यहाँ पे तो अभी तक हम supplements को भी steroid समझते हैं. Steroid तो है ही steroids obviously. Supplements को भी हम steroid समझते हैं. और अभी भी आप किसी से पूछो यार जिम हम natural करेंगे, हम कोई supplement नहीं खाएंगे. अच्छा आपका favorite bodybuilder कौन है? Arnold. You understand what I'm saying, right? So Arnold was never natural. Nobody जो देखें कोई भी जो अपने स्टेज पे गया है, अभी क्या पहले तो फिर भी एथलीट्स जो स्टेज पे जाते थे ज़्यादातर वो यूज़ करते थे एनाबॉलिक्स. अब तो आई थिंक what's an anabolic? Anabolic steroids that will be a whole chemistry of science, right? Anabolic steroid is something which will help you gain muscle. Let's just shorten it up, right? And catabolic is something which will help you burn fat and lose muscle. Catabolic एक environment है body का, anabolic in which you gain muscle. That's an anabolic environment. So there are chemicals you can use in order to help you with that. Have you ever taken steroids? I have. And like जो सारी ये rumors होते हैं कि steroids ली तो देखें impotence के लिए चले. There are people why is it so bad steroids? Just as in for a layman like me. The misuse of everything is bad. ठीक है. So in कोई the भी right चीज़ आप environment, misuse in the right environment. Do you think Amir Khan in all of these transformations you see anything is natural? Tiger Woods, he had eye surgery जिससे उसका vision एक normal इंसान से 2 गुना ज़्यादा बताया जाता है. Isn't that his steroid? अच्छा वो भी उसका स्टेरॉइड है. There's a documentary on it. Bigger, faster, stronger. YouTube पे आप देखिए उसको. तो वो उसको मसल तो नहीं चाहिए था, तो वो टेस्टोस्टेरोन तो नहीं लगाया उसने, लेकिन उसकी जो स्पोर्ट है वो डेप्थ परसेप्शन के ऊपर बेस्ड है. So didn't he get his eye surgically enhanced? Isn't that steroid? Isn't that cheating? Obviously it is. And lots of people who have been called out. And देखिए scapegoat किसी को बनाया जाता है. 1988 सोल ओलंपिक्स में पहले जो टॉप 2 रनर्स थे दोनों डोप टेस्ट फेल कर गए, लेकिन उन्होंने बल्ली का बकरा बना दिया बेन जॉनसन को. ही यूज विंस्ट्रॉल, राइट? तो उसका और जो फर्स्ट था उसका भी रिजल्ट सेम आया, लेकिन दे हैड टू हैव वन स्केपगोट, डिडंट दे? तो उन्होंने बेन जॉनसन को बना दिया. और अब वो लैंस आर्मस्ट्रॉन्ग है, he was busted as well. Do you think anybody who wants to reach an elite level of fitness or sports or whatever it is, do you think they will not do anything that it takes to be at that level? Sylvester Stallone is 75 years old. Expendables, I think 3rd or 4th part बना रहा है वो 75 साल की उम्र में. Do you think he is doing that by eating eggs and chicken? He was busted in Australia trying to. He had this a huge crate of growth hormone on him. He was trying to get it into or either out of Australia. जो एक्टर्स हैं अगर वो अपना चेहरा या नाक या किसी तरीके से अपने आप को enhance करते हैं, अपने फीचर्स को, रिंकल्स छुपाते हैं, कुछ भी सर्जिकल प्रोसीजर्स कराते हैं, isn't that what they are supposed to do in order to look young and get the work that they do? Everybody, your kid next door जिसको जुमा 4 दिन नहीं होंगे जिम जाए हुए, वो भी कर रहा होगा. Now the question is, are you smart enough to do it? Now that is the real thing. When you say smart enough to do it, what do you mean? Do you have the right knowledge? Do you know where to stop? Do you know how to monitor your blood work? Do you know how to detox? Do you know where is the red flag? कहाँ आ रहा है? We don't. Majority of the athletes don't.
जो प्रोफेशनल्स हैं जब वो स्टेज पे जाते हैं दे आर एट देयर मोस्ट वल्नरेबल. देयर ब्लड रिपोर्ट्स, अगर आप एक ऑन स्टेज बॉडी बिल्डर का ब्लड रिपोर्ट किसी डॉक्टर के आगे रखें तो वो कहेगा यार ये तो कोई मरने वाला आदमी है, इसका तो जिसमें ना पानी है, खून इसका गाढ़ा है, यू नो व्हाट द हेल्स गोइंग ऑन, लिवर एंजाइम्स इसके LFT RFT इसके ऊपर है, गैमा GT इसका एलिवेटेड है, किडनी फंक्शन इसके सारे हे वायर है, ये है कौन, कोई मरने वाला है? और जब हम स्टेज पे उसको देखेंगे हम कहेंगे यार क्या बात है, यू नो दैट्स हाउ वी वांट टू लुक लाइक, यार लुक हाउ ripped and diced he is. एंड बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में आप स्टेज पे जाके यू डोंट लिफ्ट एनीथिंग, राइट? यू जस्ट No, it's basically a display of your muscles. Okay. And there are marks allotted to every muscle based on whatever muscle group it is. Again, Back के yeah. muscles हैं, biceps के muscles हैं, and all of that. So for the layman, like for myself, like it's very confusing because there's these, you know, oiled up men and they're doing something, I don't know what they're doing. Like, how do they, is it based on like muscle definition? Is it based on, what is it based on? size and definition, both Size of them. and definition. Yeah, how defined you are. See, So size तो वो measure नहीं करेंगे या क्या है? no. See, it's very possible कि एक 22 इंच का या 45 इंच का चेस्ट वाला एक 40 इंच के चेस्ट वाले से हार जाए क्योंकि उसकी मसल क्लैरिटी और डेफिनेशन ज़्यादा है. इट्स अबाउट हाउ डिफाइंड एंड रिप्ड यू आर while how big you are, which is a very complex field of science, by the way. So Sounds bodybuilders complicated. deserve a lot of respect for doing what they do. It's pushing your human body and mind to an absolute limit. You know, that's not something every person is capable of. Let me show you. और आपने दो बातें की that I want to sort of go back to. One of them is just, you said that there's a, you know, usage of steroids and if you can use it Rampant. no, you said that there is a way to use steroids जो अगर आपको पता हो तो What it's you're safe. doing. Yeah, Yeah. तो it's safe. Assuming कि आपको पता है कि how to make it safe, why did you stop using steroids? See, if I'm not competing, if my livelihood is not dependent on winning a particular show, you know, back in the days जो professional athletes थे उनका वो रोजगार ही वही था. If you did not win a show, you did not have money to feed your family, so they would take every possible risk. I have a lot to lose, and I think everybody in this society has a lot to lose if you go for a needless risk. Like, you know, I have a family to take care of. You have a family to take. You have businesses. I have businesses. So why would I take a risk needlessly or over excessively जिसका मुझे कोई रिटर्न नहीं है? Why would I do that? Addiction to it though? See, anything can be an addiction. You know, there are people जो चाय पीते हैं उसको हमने आज तक एडिक्शन क्यों नहीं बोला? कितना चाय का इम्पोर्ट बिल कितना आता है हमें? Why isn't somebody speaking about tea as a addiction? Why is just steroids है? क्यों steroid ही क्यों है? चाय क्यों नहीं है? नस्वार क्यों नहीं है? चरस क्यों नहीं है? एडिक्शन में घूम फिर के सारे आते हैं स्टेरॉइड्स के ऊपर. जो आपके चिकन जो पोल्ट्री फार्म है, आपको पता है पहले चिकन जो है फ्रॉम द टाइम इट वुड हैच फ्रॉम अ चिक टू द टाइम यू कुड टेक इट टू अ स्लॉटर हाउस, उसका टाइम ड्यूरेशन आपको पता है 120 से 150 दिन होता था. अब इट्स ऑलमोस्ट लाइक 65 days. सो हाउ डू यू थिंक दैट्स हैपनिंग? उस पर कोई क्यों नहीं बोल रहा कि उसके स्टेरॉइड में उसके जो फॉडर है उसमें स्टेरॉइड क्यों नहीं है? ये जो आपके एक्सेसिवली बड़े जो भैंसे और वेड़े बिकते हैं बड़ी ईद पे 12-50 लाख के, हाउ डू यू थिंक दे गॉट दैट बिग? You think they were उनको दम दरूद करते थे, वो अच्छे वाले कबाब थे ना? खिलाते थे. They're injecting them with veterinary steroids. Boldenone is a veterinary drug which is, you know, injected to animals in order for them their red blood cells to grow abnormally. जब abnormal red blood cell production आएगी बॉडी में, what do you think is going to happen to the animal? जिसको हम बड़े शौक से खरीद के लाते हैं, उधर कोई स्टेरॉइड पे बात नहीं करता. अभी मैंने आपको टाइगर वुड्स की मिसाल दी है, That's crazy. लांस आर्मस्ट्रॉन्ग की दी है. यू नो देयर वाज अनदर साइक्लिस्ट, उसने अपने घर में एक हाई एल्टीट्यूड चेंबर वॉल्ट बनाया हुआ था, तो ही यूज्ड टू स्लीप इन इट एवरी नाइट. उसमें ऑक्सीजन लेवल्स ड्रॉप होते हैं, सो इन ऑर्डर टू काउंटर दैट योर बॉडी हैज टू प्रोड्यूस मोर रेड ब्लड सेल्स. जैसे पहाड़ी लोग हैं, अगर हम पहाड़ पे जाएं उनके साथ थोड़ा सा वॉक करें, हमें सांस ना आए, एंड दे आर एब्सोल्युटली फाइन. सो ही मिमिक दैट सेम एनवायरनमेंट इन हिज ओन बैकयार्ड. क्या वो उसका स्टेरॉइड नहीं है? Even You for know, example, Salman Khan gets a hair transplant and he's still getting roles at 56 years of age. उस पर कोई क्यों नहीं बोलता? Why is it just testosterone? अच्छा, एक और बात बताऊँ, testosterone is something जो आपके और मेरे जिस्म में 30 साल की उम्र के बाद वैसे ही डिक्लाइन करेगा. अच्छा, तो अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं अपनी विटामिन डी रिपोर्ट लेके, वो कहता है आपका विटामिन डी लो है, मार्केट से खरीदो और महीने में तुमने 1.5 लाख आयु का एक एम्प्यूल पीना है. हाउ इज टेस्टोस्टेरोन और ग्रोथ हार्मोन एनी डिफरेंट? यू नो, टेस्टोस्टेरोन इज व्हाट मेक्स अ मैन अ मैन. आपकी आवाज़, you know, every male characteristic you have in your body is because you have testosterone. जैसे आपके जिस्म से मैं टेस्टोस्टेरोन निकाल दूं, you eventually start turning into a woman. Your voice, everything, your organs, everything. It's a reverse procedure. out of curiosity, why does the testosterone go down after 30? मतलब कोई इसकी वजह है? It's a very simple answer. It's called aging. It's just It's aging, yeah. So we're all losing testosterone. If you're asking the other factors, see, रात की नींद is very crucial with respect to your body, you know, generating testosterone. How many of us are sleeping at the prime time?
blue light exposure, cell phones हैं आपके, laptop screens हैं, all of these things, smoking, eating processed foods, stress, all of these things are going to bring your testosterone down. And is it true that testosterone makes you angry? जिस तरह वो लोग नहीं कहते इसमें तो बहुत ज़्यादा testosterone in the room. Absolutely. See, why? Testosterone is going to enhance what you already are. Okay. So if you're a dickhead and you use testosterone, you'll become a bigger dickhead. Right? So it'll just sort of bring out what you truly are from within. Right? So वो भी एक बड़ी weak argument है कि बड़ा शांत आदमी होता था, इसने testosterone शुरू किया, अभी ये टकरे मारता है. Then that means he was never a calm person. It was just a matter of time. तो वो आपकी personality को basically magnify करता है. It's not something, it won't do anything which you're not. तो ये भी एक और myth है कि एक आम आदमी भी testosterone ले तो वो जाके सर मारना शुरू करता है, ऐसा नहीं है. And the most important part is, see, anything which, steroid तो हम इस्तेमाल करते हैं, हम उसको glorify भी बहुत करते हैं, right? We glorify it. आप जब Olympia stage पे जाके, you don't want to see a 70-year-old guy with abs posing on stage. You're not paying for that ticket. Right. You're paying to see a 280 kilogram ripped, huge mass monster जिसको आप देख के कहते हो, wow. Yeah, of course. You want to see that's a monster. what sells, right? Yeah. And do you think the organizers don't know कि ये बंदा जो है इसने ठीक-ठाक steroids use किए? Of course. They do. They turn a blind eye to it, don't But you want to see a monster. You want to see a monster and you're creating it. अगर आपको steroids से इतनी problem है तो Olympia shows क्यों होते हैं? And why do you admire people who are better built? And now the biggest problem I have with the steroid discussion is people think कि आपने testosterone लगाया and you are buffed up the next day or 2 weeks later. It does not work like that. I've seen idiots use every steroid under the sun and still look absolutely shit. You know why? Because training से करे. So, Is it because they're not training well? They're not doing anything well. They think it's a magic pill जो आप inject करते हो, the next day you wake up and you're all buffed up. People who are taking steroids are 10 times more harder working than a normal gym go person because they realize that. And see, if a person wants to have 21 इंच के बाजू चाहिए उसको या उसको 200 किलो का होना है, 150 का होना है, 180 का होना है, why should anybody have a problem with that, right? Why? If I want to look a particular way, it's my health, it's my body, it's my choice. And if I know what I'm doing. Do you get that a lot? वैसे a lot of people in Pakistan generally ये कहते हैं ना मैंने तो बड़ा नहीं होना या इस तरह मैंने. Yes, it's very comical. Yeah. अच्छा, Arnold से एक दफा किसी ने ऐसा बोला, oh, I never want to look like you. तो Arnold, he was smoking a cigar or something and in a badass way he says, you never will, don't worry. Oh sir, हमने gym करना, आप जैसा नहीं बनना. ये नहीं होता, इतना नहीं. नहीं, literally they act as if 2 हफ्ते लगाएंगे तो बस हो जाएगा ना. See, you don't waste time trying to justify that to them. So it's better off, turning a blind eye to it. हाँ, मैं कहता हूँ, हाँ यार, बिल्कुल भी. मैं भी बड़ा तंग हूँ यार. मैं भी आप जैसा बनना चाहता हूँ. तो it's, आप देखो, you don't justify or start explaining things to every person you come across. You'll waste a significant part of your day. So just let it be. It's okay. And let's go back to actually हम Hamza, Abbasi, Fawad Khan training them for Maula Jatt, उसकी बात कर रहे थे. Obviously we. Yeah. The way मैंने आपको बताया था, Umair and I, we go a long way back. Yeah. So Umair rings me up one day and he says, I have this role of a SSG commando in a upcoming film, Yalghar. So I need to look like a SSG, I need to be buffed up, and it's the first time कि Pakistani cinema में. I think Umair was a pioneer. I don't think we remember any actor who came on the big screen as a big muscular guy. Umair was the first one. क्योंकि उससे पहले वार आई थी और वार में शान was exactly. वार में आमिर भाई जो है, आमिर रऊफ साहब, अल्लाह जन्नत नसीब करे उनको, वो he recently passed away. अच्छा. उनका एक छोटा सा कैमियो था. But the lead Hamza भाई उस वक्त, it was not about muscles and all. लेकिन Umair wanted to bring that to Pakistan and he pioneered it, So he said, this is what I have in mind and, we need to get there. मैं कहा, आ जाओ कल से. So we trained for 6 months. ठीक है. And he reached this particular shape and size and it was absolutely amazing, And जब उसका काम बिलाल भाई ने देखा, बिलाल लशारी ने, और जब उसको देखा उन्होंने, and obviously they found out that he was training with me and he put in a very good word of mouth as well. So naturally when Fawad bhai and Hamza bhai had to transform for Maula. अच्छा, Maula was not, उसका transformation ये नहीं था कि आपको, you had to come in with a 6-pack. You're talking about a एक ऐसा दौर क्या बात कर रहे हैं जिसमें you were big, but you were not, veiny and you had a 6-pack. You had to be bulked up. Yeah. More like Christian Bale did in The Batman Begins. Right? Yeah. तो ये गोल नहीं था कि कोई beach body बनानी. We had to buff them up. Look big and, threatening, and जो उनका role है, Maula का, Noori, Nath का, those were very intimidating characters. They were not like skinny characters. So you had to build up that physique to match with the persona of their characters. So the bulking up was the part. तो उन्होंने बिलाल लशारी contacted me and he said, so this is
how we want our leads to look like, and Did he give you like a reference image or something? he How did, you know what to which do? was not quite realistic, but he did send me a reference वैसे image. what was it? उन्होंने मुझे आई थिंक कृष्ण बेल की ही भेजी थी, लेकिन मुझे याद नहीं किस मूवी की थी, शायद डार्क नाइट राइजेस की, समथिंग लाइक दैट. अच्छा तो then when you work with, And they gave me a very short time frame as well. how long did they give you? They gave me a very unrealistic time frame, lekin I was able to get a little extension on that. I think they gave me like 2 months or something. 2 months. 2 months, which was And at basic. the time were they working out, Fawad and Hamza Ali? No. Fawad bhai used to work out before, but when he came over and he met me for the first time, he had not been training a while. So he was quite out of shape at that time. So, hats off to him. Unhone badi mehnat ki. And how regularly was he training? We were training around, I think, 4 or 5 sessions a week. 4 or 5. When he came over to Islamabad. ठीक है. Then I went over to Lahore. मैं Thursday की रात निकलता था, Friday की सुबह पहुंचता था. Friday, Saturday, Sunday we used to train, and Sunday की शाम को मैं वापस Islamabad. I did that for a couple of months. And just a 1 hour session or how? No. We used to divide it into 2 parts. So one was entirely based on cardiovascular training, and the other one was on weight training. It would be unfair to combine them both in a single session. That would be too much for the body to handle. So we divided into 2 parts of the day. Had either of them ever trained like that before? No, not at all. That was the first time they had been exposed to a training of that intensity. So it was the first time. And they were fighters here. They took it really well. Unme koi stardom wala wo naaz nakhra nahi tha. In fact, we are family now. Fawad bhai, he actually came over when my son passed away. When jab bhi Lahore jata hu, I have his chef's number. So whatever I feel like eating, I call the chef directly ke Fazal bhai aaj aisa bana. They are the most welcoming people on earth. Achha. And That's very nice to we hear. developed this bond. And basically भाइयों वाला ताल्लुक है. They are amazing people. भाभी बहुत ज़बरदस्त है. फवाद भाई, the kids, everybody. हमजा भाई, they're family now. उनकी मेरे अब्बू से बड़ी गपशप है फवाद भाई की. So हमारा अब जो है शुरू एज अ ट्रेनर क्लाइंट हुआ था. But we, like I told you in the beginning of the podcast, a personal trainer is a very, very close bond. It's closer than, and it's more beautiful than any relationship you probably have in your life. The most, Vulnerable, I guess. you are vulnerable, but you have to be careful around who you are vulnerable with. You have to trust factor pehle aana chahiye. But I think the least judgmental relationship in your life is your trainer. You can talk to them about anything. You train with them. You go out. You go out to eat. It's a beautiful relationship. बहुत अच्छी दोस्ती का एक ताल्लुक होता है. And that's how I've always tried to keep it. दोस्ती में, प्यार में, लाड में आप सब कुछ करवा लेते हो. वरना ये काम ऐसा इतना मुश्किल है कि ये आप ज़बरदस्ती कर ही नहीं सकते. और आपने जिस तरह एक और बात भी की ना, which I wanted to touch on, जिस तरह फवाद भाई या हमजा अली अब्बासी and any of these actors, they go and they really do some grueling work to get into shape. और मैंने notice किया when I'll be like, यार that actor, उसकी transformation, they'll be like, यार लेकिन ये तो उसका काम है, इसका full time job है. I don't know. कहाँ से ये बातें आती हैं कि हाँ, अगर मुझे 3 करोड़ दिए जा रहे होते हैं 10 करोड़ तो मैं भी कर लेता. But that's so stupid. मतलब इसकी मैं कभी कभार सोचता हूँ कि अच्छे पे कर लो ना जाके. अगर Exactly. Put your money where your mouth is, and you'll see how realistic it is. Exactly. Fawad bhai and Hamza bhai, Shayan bhai, they trained very hard. And I had a very narrow time frame. And मैंने उनको भी तब हर सेशन के बाद मैं सॉरी बोलता था. जब वो पड़े होते थे ज़मीन पे तो मैं उनको सॉरी बोलता था कि यार it's not my fault. I have a time frame. We have to do it. We have to push beyond what I would normally push a regular person, but in a safe and controlled manner. Alhamdulillah, we went through it. There were no injuries, there were no side effects, and the result will be for everybody to see in a month and a half's time. Yeah. That would be something very different than what the people were used to seeing. But मैंने जैसे पहले कहा, both of these individuals, they are very, very hardworking. उनमें किसी किस्म का कोई नाज नखरा नहीं था. They went hard, they gave it every single thing, every fiber of their body, they pushed. That's something I've always admired. Not just Fawad bhai and Hamza bhai, I trained Bilal Ashraf, Ali Rahman, Ali Moin Nawazish, all of these actors. They were wonderful people. इनमें किसी किस्म का वो नहीं था कि यार काफ़ी है इतना है. They pushed and they went after it. Yeah. They were very hardworking, all of them. So I'm very proud of the results we have been able to achieve, not just with Fawad bhai and Hamza bhai, but with all of Bilal bhai, Ali Rahman, Imran Abbas, all of them. I've trained all of them. They're all very hard workers here. And can I ask a slightly different question now? रेट बंदा देख के डिफाइन होता है क्या? आई हैव नेवर अंडरस्टूड कि ये रेट आपने कहा था ना एक्सपीरियंस का होता है. फर्स्ट डू यू चार्ज द फिल्म, डू यू चार्ज द एक्टर्स इन पर्टिकुलर, हुज सॉर्ट ऑफ हाउ डज दैट वर्क? जो फवाद भाई हमजा भाई का जो था सारा वो आई थिंक इट वाज हैंडल्ड बाय द प्रोडक्शन बाय बिलाल. आई डिडंट रियली आस्क द इंट्रिंसिक्स. मुझे उससे कोई मतलब नहीं है. दे आस्क्ड फॉर माय फी, आई टोल्ड देम व्हाट इट इज.
अब वो फवाद भी दे रहे थे, हमजा भी, I never asked that. And your fee varies based on the amount of hours, or it based No. I have two packages. One is group training and one is individual, and the rates are the same. I don't manipulate them. Even if the client is, you know, a millionaire or a billionaire, तो मैं कुछ surplus charge नहीं करता. स्टैंडर्ड रेट है. हाँ, स्टैंडर्ड है. एंड यू नो, इन ऑर्डर फॉर मी टू प्रूव इट, मैं उन्हें कहता हूँ आप रैंडमली मेरे किसी असिस्टेंट से कॉल करके पूछ लें, या मुझे किसी रैंडम नंबर से किसी और आवाज़ में पूछ लें. यू विल नेवर हैव टू ओपिनियंस. तो मैंने जो मेरे टाइम के लिए जो मुझे वर्थ लगता है, आई थिंक आई एम एब्सोल्युटली एंटाइटल्ड टू चार्ज व्हाट आई फील इज राइट फॉर द टाइम आई एम गिविंग एंड द रिजल्ट्स आई एम गिविंग. अब एक मिसाल देता हूँ. मुझे बताइए, आपके इंसानी जिस्म और सेहत से इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है? कुछ खास. We spoke a while ago, you know, about something our mothers are going through. Yes. Any amount of money in the world, if we could take that pain away. Of course. You know, my mother is terminal. She's paralyzed. She's only 55 years of age. You know, if there was anything I could do, You would do it. I would do it in the blink of an eye. आपकी इंसानी सेहत से, इंसानी जिस्म से इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है? Is there anything? And I think No. So जब हम लोग iPhone 13 Pro Max लेते हैं, you know, 3-4 लाख का फ़ोन लेते हैं, हम ये एप्पल के लैपटॉप लेते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा परफ्यूम लेते हैं. यू नो, गुड परफ्यूम, द वन आई लाइक इज़ फॉर 65,000, वो क्रीड एवेंटस है, बट आई लाइक इट, लास्टिंग अच्छी है, मुझे खुशबू पसंद है. सो व्हेन आई चूज़ द बेस्ट इन एवरीथिंग, नॉन मटीरियलिस्टिक और मटीरियलिस्टिक, व्हाई शुड आई, यू नो, चूज़ एनीथिंग below par for my own physique, for my own body? Why? And I think a lot of the times, a lot of people look at the gym as something which is a luxury or an exterior. जैसे ये अभी कोरोना वगैरह आया, या जब किसी का हाथ तंग होता है, तो वो कहते हैं यार हम जिम छोड़ देते हैं. वो अपनी बाकी हरकतें नहीं छोड़ेंगे. यू नो, ईटिंग आउट एंड ऑल ऑफ दैट, पार्टिंग, वो नहीं छोड़ेंगे. वो कहेंगे यार जिम से हम थोड़े पैसे बचा लेते हैं. तो जब आपका माइंडसेट ही ऐसा है, तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? व्हाट्स द स्पोर्ट गोइंग टू गिव बैक टू यू? नथिंग. मसला अक्सर ऐसे आ जाते हैं ना कि यू मीट लाइक आई मतलब न्यू सम पीपल, यू नो, दे वर ओवरवेट, लाइक ओबीस, एंड उनका ये इशू आ जाता है कि यू नो बाय द टाइम यू रियलाइज द इफेक्ट इट हैज़ ऑन योर लाइफ, यू नो, योर लाइफ लिटरली लाइक मेडिकल इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं. फिर आपको वही जो ट्रेनर है ना, वो आपको फरिश्ता नजर आता है. हाँ, फिर आप भागते हो उसके पास. नजर आता है. एंड देन द अदर प्रॉब्लम इज यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम एब्सोल्यूट रॉक बॉटम, राइट? सो यू हैव ऑलरेडी डन द बैड बिट, एंड देन एज इन मेरा पॉइंट ये है ना कि जिस तरह आपने कहा ना, यू आर टॉकिंग अबाउट आवर मदर्स इन दिस केस, उस वक्त पे तो यू विल पे एनीथिंग, राइट? बट द प्रॉब्लम इज कि we get there only at the last second. See, अब मैं मेरी एक आदत है, अगर मैं मार्केट में कुछ खरीदने जा रहा हूँ और मैं इमाम मस्जिद साहब को देखता हूँ कुछ खरीदा है नेबल एडम पे, तो एक दिन मुझे कहा आप ऐसा क्यों करते हो? मैं कहा इमाम साहब, आप ही ने कल को गुस्ल देना और आपने नमाज जनाजा पढ़ानी है, आपकी कदर करेंगे तो फिर आपको दुआ शुआ कराएंगे हमारे लिए. तो आई ट्राई एंड मेक इट, यू नो, लिटिल फनी एंड ऑल. इसी तरह, यू नो, आपने अभी खुद ही बात कर दी कि एक ओबीस बंदा है, जब उसको डॉक्टर कहते हैं ना भाई तुम्हारा फैटी लिवर हो गया है, तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल इतना है, यू वल्नरेबल टू हार्ट अटैक, वो भागता हुआ वापस आएगा, वो आईफोन बेचेगा, वो ट्रेनर को कहेगा भाई तू पैसे ले और मुझे बस जल्दी से ठीक कर दे, राइट? सो ट्रेनर इज एन एक्यूमुलेशन ऑफ मेनी थिंग्स, अ फ्रेंड, अ टीचर, यू नो, अ साइकेट्रिस्ट, psychologist, whatever. Psychologist more likely because you cannot prescribe medicine, so you are a psychologist. You are a bit of a doctor. आपको फर्स्ट एड ये सब चीज़ें आनी चाहिए. अगर आपके ट्रेनर को ये चीज़ें नहीं आती, शुरू में आपने सवाल पूछा था, अगर आपके ट्रेनर को हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, लो ब्लड शुगर में फ़र्क ही नहीं पता, अगर आप यू नो यू पास आउट एंड दे डोंट नो व्हाट टू डू, तो ये सब चीज़ें देखनी चाहिए बिफोर यू डिसाइड हु यू वांट टू ट्रेन विद. सो इट ब्रिंग्स अस बैक टू द फर्स्ट क्वेश्चन यू आस्क्ड. हाउ डू यू डिसाइड? आई मीन, मैं जब जाऊँ तो मैं क्या उसको बोलूँ, सीवी दिखाओ? Qualification, yes, and once again the answer is the transformations that have come out of his camp. So you have to look at like absolutely, you have to do your homework. Yeah, you just don't walk to a random person and you say, you know, train me. उसके ऊपर थोड़ा रिसर्च करो. जैसे हम एक मूवी देखने से पहले अच्छी तरह आई थिंक रॉटन टोमेटोज की रेटिंग देखते हैं और सब कुछ, IMDb देखते हैं, लेकिन ट्रेनर की तरफ हम लोग नहीं देखते हैं. ट्रेनर ऐप बननी चाहिए यार, जहाँ पे पता हो गया यार इसकी कितनी ट्रेनर ऐप की जरूरत नहीं. वर्ड ऑफ माउथ इज ऑलरेडी, मेरी नजर में इससे बड़ा ना कोई ऐप था ना कोई होगा. लेकिन आप उस सर्कल में भी है ना, लेट्स से मैं हूँ ना, जिस तरह मैं किसी को, I was not always in that circle, you know. I worked very hard. I did not find it either. It found me. I did not know how to reach out to those people, right? I was just doing what I wanted to do best, and I did not choose to be a trainer, by the way, Shayan bhai. What happened was, मैं Fast University में, Danish would recall, I had this little seminar arranged. याद है हमने एक फिटनेस के ऊपर एक सेमिनार किया था, जलाल हैदर खान को हमने बुलाया था. अच्छा. तब ये स्मार्ट जिम नया बना था. इट वाज द फर्स्ट मॉडर्नाइज्ड जिम इन पाकिस्तान. हमने वो मतलब सोना भी है, स्टीम भी है, वो भी है, कैफे भी बना हुआ है.
तो जब मैंने उनको बुलाया, इनवाइट किया कि सर आप आगे थोड़ा यूनिवर्सिटी में बात करें फिटनेस की इंपॉर्टेंस पे, सो व्हेन आई ओपन अप द कार डोर फॉर हिम एंड ही वॉकड आउट, तो उन्होंने मुझे देखा, कहता है किधर तुम ट्रेन करते हो? मैं कहा जी I8 में। यार मैंने नया जिम बनाया, तुम अब उधर आओ, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, आई वांट द जिम टू हैव गुड एथलीट्स लाइक योरसेल्फ, अच्छी फिजिक वाले लड़के हों। तो उधर जब आई जॉइन फ्री में भी था, कोई फीस भी नहीं थी तो और नई नई चीज़ें थी जी, सोना स्टीम सारा कुछ उधर था, हमें और क्या एतराज़ था भाई, हमें फ्री स्पॉन्सरशिप मिल गई। तो उधर एक दिन देयर वाज दिस कमोशन इन द जिम, सो आई वॉकड अप एंड दिस इज हाउ आई बिकेम अ ट्रेनर। आई डिडंट, व्हेन आई वाज इन फास्ट, दिस इज व्हाट द गोल आई हैड इन माइंड, राइट? वही होगा जो बाकी लड़कों का होता है, कोई मल्टीनेशनल ज्वाइन कर लो, ऐसा कुछ। आर्मी के लिए अप्लाइड ट्वाइस, गॉट रिजेक्टेड बोथ टाइम्स, फ्लैट फीट, एंड the final comment was, does not seem to pay heed to orders, which is true. तो जब मैं उस कमोशन पे गया तो उधर ये हमारे बिलोर फैमिली है, आपको पता होगा, द पॉलिटिशियन फैमिली, उनके 2 छोटे बच्चे हैं, शहरबाज और मीरबाज। दे वेरी ब्यूटीफुल फ्रेंड्स ऑफ माइन, यू नो देम राइट? तो वो बच्चे हैं, उस वक्त बच्चे थे, दे वर लाइक 13 and 15 years old. So I saw them and they were on the floor, passed out, and they were bleeding from their nose. तो मैंने देखा, and the trainers were trying what they had to, कोई पट्टी कर रहा है, कोई सफाई कर रहा है। द नेक्स्ट टाइम एट द, मैंने कहा क्या हुआ आपको, व्हाट हैपेंड यस्टरडे? कहते हैं जी हमें थायराइड का इशू है, ब्लड प्रेशर का इशू है, 1-2 और उनके मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस है जो बाय बर्थ है बेचारों के। तो मैंने सिर्फ कॉमन सेंस की एक बात थी, मैं कह अगर आपको ब्लड प्रेशर का इशू है तो आप अपना बीट्स पर मिनट मॉनिटर क्यों नहीं कर रहे हो? जब आप ट्रेडमिल कर रहे हो तो वाई आर यू लेटिंग योर हार्ट रेट गो बियॉन्ड 160, 170, 180? आप 160, 150 से नीचे रहो। कॉमन सेंस आई गेस, लिटिल बिट ऑफ रिसर्च। जब मैंने उन्हें कहा कि अपने बीट्स पर मिनट अपना हार्ट रेट मॉनिटर करें, एंड दैट्स व्हाट दे डिड द नेक्स्ट डे, एंड दे नेवर हैड अनदर एपिसोड लाइक दैट अगेन। सो वन फाइन डे आई एम ऑन द फ्लोर एंड आई गेट अ कॉल फ्रॉम द ऑफिस कि देयर समबडी हु वांट्स टू मीट यू। सो आई गो अप एंड देन उनकी वालदा आई हुई थी, तो उन्होंने कहा कि आप ट्रेनर हैं? मैं कहा नहीं मैडम, मैं तो बस जिम आता हूँ शौक के लिए। कहती हमारे बच्चों ने बताया कि आप इन्हें जब से गाइड कर रहे हैं, इन्हें कोई इस तरह का कोई इवेंट नहीं हुआ कि दे पासिंग आउट और देयर ब्लड शुगर्स ड्रॉपिंग, could you train them please? So that is how you were I a trainer at the time. No, I was not. I was just going to the gym and training for myself. That is how those 2 were my first clients. Wait, I accidentally became a trainer. became a trainer. And then जिस तरह वक्त गुजरता गया और complications आती गई मेरी नज़र में, clients के मसले मसाइल, then I started to educate myself on them. And I paid a great deal of money to foreign consultancies, doctors. जैसे PCOS के cases जब मेरे female clients में आए, that's the first time I was exposed to what a PCOS is. So I learned about it. I paid doctors in the UK. I उनकी consultancy fee देता था, and I used to learn from them कैसे cases को किस तरह लेके चलना है, इनकी nutrition क्या होनी चाहिए, all of that. So you multiply that with the course of time, you start building it up. And was there ever like a train the trainer kind of situation where there was someone who was teaching you or someone you used to take guidance from? It would be a lie if anybody claims that they did not have anybody to guide them. I did not have anybody to guide me to be a trainer, but I did have people who guided me when it came to discussing a particular condition of a client, more from a medical perspective, right? हर trainer का अपना style, जैसे आप 2 chefs एक जैसा omelette नहीं बनाते। That is why I have respect for every trainer's work. मेरे पास कोई आता है client तो they think they'll get off better with me अगर वो पिछले trainer की बुराइयाँ करें। I stop them right away. कहते हैं देखो, don't do that. I do not want to know who your previous trainer was. Do not badmouth anybody. आप आ गए हो, let's start from ground zero. I do not want to know पिछला trainer कौन था, उसने क्या किया. It's very highly unprofessional. और इस तरह अनफॉर्चुनेटली लोग कोशिश करते हैं करने की, राइट? तो दैट्स हाउ आई बिकेम अ ट्रेनर बाय एक्सीडेंट, it sort of chose me more than me choosing it as a profession, and I've enjoyed it ever since. There's no greater satisfaction than making somebody's life better. So when it's not just losing weight, if somebody's sleeping better, they are getting on with life, they're getting back to life after a particular tragedy in their lives, and they associate you to be a reason for that. I think that's the best and most beautiful part of what I do. It's the same as a doctor performing a surgery, a teacher standing at the graduation ceremony of their clients. And you meet a lot of interesting characters along the way. जैसे मेरा एक recent online training program था, उसमें मैं एक questionnaire लेता हूँ कि आप मुझे अपने दिन के बारे में, there's a lot of data, blood reports होती हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो उसमें वो जो साहब थे वो दिन में उन्होंने अपना मुझे रूटीन था, मैं 2 बजे उठता हूँ, आई स्मोक अप एज सुन एज आई वेक अप, मतलब मैं रिजला बनाता हूँ। तो उसने अपना पूरा रूटीन बताया जिसमें 4 रिजले थे, जो उसने खुद बताया हुआ था। ऑब्वियसली यू हैव टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट विद योर ट्रेनर। तो आई स्मोक अप एट दिस टाइम, मैं खाना खाता हूँ, आई हैव अनदर स्मोक अप, देन दिस। तो जब मैंने उसकी रूटीन बना के उसको दी तो कहते हैं हसान भाई, इज़न्ट ये जो आपने मुझे बीफ दिया ये सेहत के लिए बुरा नहीं होता? तो
It'll kill him, huh? It'll kill him, huh? But the other things won't. So, you meet lots of interesting people along the way. And the most satisfying part, I'd say once again, is when you see that you have brought somebody back to life in your own way. It could be anything. और ट्रेनिंग सिर्फ ये नहीं है कि वेट लॉस या वेट गेन को कहते हैं. इट्स मोर साइकोलॉजिकल एंड इट्स मोर डीप रूटेड देन जस्ट वेट गेन और मसल गेन और वेट लॉस, मसल लॉस. It's a way of life. Yeah, I was going to say that. It's a psychology. It's a way of life. So actually, I was going to say right in the beginning of our conversation, आपने बताया था कि पहले ना आप क्रिकेट खेलते थे और then you obviously had the issues with drugs. But in the beginning, आप एक cricketer थे that transformed into someone who went to the gym. और ये बहुत different disciplines हैं, right? So even more different is my initial passion and the initial profession I was a writer. Achha. I used to write short stories and poems and my first poem got published in a magazine called The Young Times. Gulf में बहुत मशहूर magazine था Young Times के नाम से. I was 7 years old. But that actually makes, I feel like the ability to communicate is very important for a trainer. I do the same thing while I'm training my clients. Yeah. जो आप किताब और पेन पे करते हो वही आप इधर physically करते हो. It's the same thing. It's just a different inspiration. It's just a different sphere, but the mode is the same. But I was saying कि it's a self-discipline, right? That's the difference. Whereas you're competing with people, तो अगर आप cricket खेल रहे हैं तो you're trying to beat the person in front of you. Whereas अगर आप gym जा रहे हैं, it's more self-discipline. And that becomes a part of your life. And I was going to ask you, is it sort of like you replaced the drugs with this being your sort of drug, as in the training being something that you go to? Is it when you, मतलब मैंने बहुत सारे लोगों से जो जिम बहुत रेगुलरली जाते हैं पूछा है तो वो ये कहते हैं कि यार जब हमें तब चढ़ी हुई होती है ज़्यादा तो हम जिम जाते हैं. जब when they're having a bad day they go, gym becomes their outlet. How beautiful is that, right? हाँ, it's a healthy. उन्होंने खुद का जब हमें गुस्सा आता है हम जिम जाते हैं, like how beautiful is that? दूसरी alternative consider करें तो क्या होता है? You beat somebody up, you yell at people you love, you start feeling resentful. तो दूसरी तरफ ये जो दूसरा option था, which is true, not just in the gym, yeah. You go to, if you're interested in some contact sports, you work on the punching bag, you'll feel a lot calmer, don't we? That's how we are designed to be. You have this energy, you need to take it out. हज़रत लुकमान हकीम ने क्या फरमाया था? अपने बेटे को बोला तुम्हारी जवानी धुएं की तरह, अगर खुला छोड़ दोगे हवा में डिस्पर्स हो जाएगा, उसके आगे तुम होज लगा लोगे तो वो सैकड़ों काम और कर सकता है, राइट? दैट्स हाउ स्टीम से इंजन्स चलती हैं. There's still steam engines running around the world. We are that steam. Now how we channelize that defines who we are. तो मेरा बस सबको ये मैसेज होता है कि भाई ये जो आपकी ताकत है, जो आपका एक everybody has a bad day, Shayan bhai, and look around us, the times we are living in. This is the worst time in the history of mankind with respect to mental stability. Inflation को आप देख लीजिए, competition देख लीजिए, everything. Social media as well, the comparative. Of the competition gets to everybody. छोटे बच्चों को हम लोग बच्चे जो स्कूल से अभी आते हैं हम उनको उसी वक्त उनमें इंस्टिल कर देते हैं कि तुमने टॉपर बनना है, तुमने ऐसा करना है. It sort of builds up their mindset where they realize कि यार as long as I'm not on the top, I hold no worth. तो वो बचपन से आपकी अपब्रिंगिंग से बनाई जाती है. And it's high time people stop doing that. Stop doing that. Give them space, let them be who they want to be. As long as वो आपके दीन और प्रिंसिपल्स और मॉरल वैल्यूज़ के खिलाफ कोई काम नहीं कर रहे, बी ऑफ सपोर्ट टू देम. आई फेस्ड अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम माई पेरेंट्स व्हेन आई स्टार्टेड आउट. या ये तुमने क्या काम पकड़ा है? क्यों? ये क्या मतलब जिम क्या होता है, ट्रेनर क्या होता है? आई गेस उस ज़माने में लेकिन इट वाज आल्सो लॉट लेस कॉमन, राइट? एंड नाउ व्हेन पीपल कम अप टू माय फादर एंड से वी बिकेम अ ट्रेनर बिकॉज हमारे अम्मी अबू ने हसान को देखा एंड देन दे सेड ओके दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू बी. तो फिर ठीक है, पढ़ाई करो, इस तरफ भी सर्टिफिकेशंस करो, पढ़ो इसके बारे में, देन वी हैव नो प्रॉब्लम. इमेजिन व्हाट अ मोमेंट दैट वाज फॉर माय फादर. माशाल्लाह. तो in order to be a pioneer of something, you have to take the initial hits. अब जो हमारे से बाद आने वाला जो ग्रुप है, जो लड़के आ रहे हैं, उनके लिए रास्ता रिलेटिवली पेव हुआ हुआ है. बट जब हमारी दफ़ा था तो we took all of those hits, all of those risks. डॉक्टर है, इतने other professions है, what are you doing? Now people have realized that this actually is one of the most important professions there is. मुझे कोई और इस तरह का प्रोफेशन दिखाता है, जिसके अंदर आप physical, all of them combined 6 factors. Which other profession has that? None. So a lot of respect to personal trainers. They're doing things which a normal person cannot do. वो बीमार है, थका हुआ है, खुश है, गमगीन है, he's there to train you and he won't tell you he's having a bad day, right? यहाँ पे इतना casual attitude है हर चीज़ को लेके. अब जैसे I had this case जिधर एक क्लाइंट ने कुछ अर्सा छुट्टी की एंड दे वांटेड मी टू गिव देम एन एक्सटेंशन. मैं कहा ठीक है, आप स्कूल में ऐसा कर सकते थे,
स्कूल की फीस में ऐसा कर सकते थे कि मैडम हम एक हफ्ता नहीं आए, टूर पे गए हुए थे, तो आप हमारी फीस ना एक हफ्ता एक्सटेंड कर दें. मैं कहा नहीं, आई एम सॉरी देन आई कैन नॉट एंटरटेन दैट ओवर हियर. Unless and until you don't give that same respect to what you're doing here, I'm not taking you on. If you want to leave, so be it. तो आपको वो लोहा अपना खुद मनवाना पड़ता है शान भाई, बिकॉज दुनिया आपको नहीं देने लगी. समटाइम्स यू गॉट टू ग्रैब द अदर पर्सन बाय द थ्रोट एंड टेक द रिस्पेक्ट यू डिजर्व. तो अभी टाइम है हमको, 10-15 साल लगेंगे और फॉर द सोसाइटी टू रियलाइज वॉट इम्पॉर्टेंट प्रोफेशन दिस इज, एंड एवरीबडी इज गोइंग टू नीड इट एट वन पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम. एवरीबडी. आप मैथ्स की ट्यूटर अच्छा ढूंढते हो, उसमें तो आपको कोई इंजरी तो नहीं आ रही ना, आपका दिन ख़राब नहीं हो रहा, नंबर ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाएंगे. यू गो टू द जिम नॉट नोइंग व्हाट टू डू, you'll be lucky if you make it to the first week without injuring yourself. So be smart about it. Everybody has to be smart about it. Choose the best guidance, do your homework, and जिम कर लो, उससे पहले आपको हालात जिम करवा दें. करना तो आपको पड़ेगा ही करेगा, चाहे वेट कम है, वेट ज़्यादा है, कोई भी आउटलेट है. इमरान खान वॉज द फर्स्ट वन जो वेट ट्रेनिंग पाकिस्तान क्रिकेट टीम में लेके आए थे. अच्छा. 70s-80s में. उससे पहले कॉन्सेप्ट ही नहीं था. Gym has always been associated with bodybuilding, unfortunately. Not with. अब जो हमारा golf number 1 है वो 3 plate squat करता है. Why? Because weight training is the fundamental foundation for every single sport. Boxer भी weight training करेगा, cricketer भी करेगा, footballer भी करेगा, name any table tennis player भी वो weight lifting करता है. So bodybuilding is entirely different. Weight training is a different field. तो मैं बॉडी बिल्डिंग कभी भी एडवर्टाइज या प्रमोट नहीं कर. आई लाइक इट, आई लाइक द एक्सट्रीम इट टेक्स मी टू एंड माई माइंड एंड माई बॉडी. आई लव इट, आई गेट अ हाई आउट ऑफ इट. आई वॉन्ट इट टू लुक अ पर्टिकुलर वे, आई एम वर्किंग ऑन इट. इफ यू डोंट वांट टू लुक दैट वे, आपका कोई और गोल है, माई जॉब इज टू रिस्पेक्ट दैट. सो हम क्लाइंट से पूछते हैं, सो व्हाट डू यू वांट टू लुक लाइक, व्हाट इज द गोल यू हैव, एंड एज लॉन्ग एज दैट गोल इज प्रैक्टिकल, वील टेल देम. अब ऐसा नहीं है कि वो आके हमें कैसा आके दिखा देता है कोई, मतलब मुझे किसी ने आर्नल्ड की फोटो दिखाई थी कि मैंने इस तरह बनना, तो ठीक है ना, मतलब मैं किस तरह ना बनो, इस तरह ना बनो. वो अपनी जेनेटिक पोटेंशियल पे अच्छा बना, तो आप अपनी जेनेटिक पोटेंशियल पे आप अपने हिसाब से अच्छा बने, आपका जिस्म इससे ज़्यादा अच्छा बनेगा. आई डोंट गोड देम और demean them in any way. That's not the role of a teacher. A teacher is supposed to be motivating, encouraging, full of positivity, full of love, care and affection. So I never goad my clients, I never do this. There's certain rules I've set down. Cell phones not allowed during training. If it's your mother or father or your wife, okay, iske alawa nahi. And do not ever be late in my class, because that's disrespectful to the class, to the gym, to what you're doing. Do you have classes as well, like this time, multiple people in the same class? That's a group class, yeah. Okay. And I have individual sessions. Some people prefer कि वो अपनी isolation में train करना चाहते हैं booked session में. So I have both packages, so they can choose whichever they like. अच्छा. And in terms of, मैं आपको ज़्यादा time और नहीं लूँगा, लेकिन I wanted to ask, in terms of the journey that you've been on throughout, what are the, if you're now like, अभी हम तो बहुत ज़्यादा बात कर रहे थे from my perspective, right? एक layman है जो जिम जाना चाह रहा है. But what about the other way? Like, let's say someone wants to be a trainer, right? What are the things? So एक natural आप में कह लें leadership, mentorship, एक capabilities होती हैं. वो तो is sort of like you said genetic. Same with your bodybuilding capabilities. लेकिन what are the things he should work on or she should work on in order to be a better trainer? Besides the learning component, what are the things that you sort of, well, I'm sure young trainers come to you for advice as well. What advice do you give them? Number one is patience. You have to be very patient. And ये मैं शायद 100 दफ़ा भी बार रिपीट करूँ, ये जो ट्रेनर है वो जो सुन रहे होंगे अभी वो इस बात को समझते होंगे. There are times the client is going to test you to your absolute limit. And you have to be patient about it. जिस तरह हमारे टीचर्स हमारे साथ पेशेंट थे. This is number one. दूसरा, आपने बड़ी अच्छी बात की, not everybody can be a trainer. Why? You need to have a particular mindset and a particular body language in order to do what a trainer does. So it's not that any random person can, oh, I want to be a trainer. It's, if you qualify to be a trainer with the particular behavioral traits and the particular personality that you have, so be it. And now we come to the academic part. Qualification, yes. First aid knowledge, yes. You need to have all of that. And then you need to be patient. You need to give it time. आपने जो चार्ज करना है, लाख करना है, 2 लाख करना है, 10 लाख करने हैं, करो. लेकिन अपना पहले लोहा मनवाओ, अपना काम इस म्यार पे लेके आओ कि अगले खुद कहें यार दिस इज व्हाट दिस गाय डिजर्व्स. सो अगर आपको 4 दिन हुए हैं, आपकी ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं है, यू जस्ट बिल्ड अ कपल ऑफ एब्स एंड देन यू थिंक यू गोइंग टू चार्ज 50-70,000, दैट्स बीइंग अनरियलिस्टिक. आजकल की यूथ का मसला है, दे वांट फेम and they want money overnight. It doesn't work that way. You have to work your way up the ladder in a very systematic way. Step by step, आप अपनी
गलतियों से सीखते हो शान भाई. It's a whole process here. And then you refine with time, you age with time, you know, you polish yourself with time. And then you reach that particular phase कि फिर आप कहते हो भाई this is what I want to charge and this is why I'm charging it. This is my the value for my time, which every person has a right to. Right. And this is what I will help you with. I'm you know, this is knowledge which stays with you, Shayan bhai. आज 6 महीने train करते हो, you leave the gym, go somewhere else. You have that knowledge. We're not taking it back from you. You know, in a restaurant आपने खाना खा लिया, खाना खत्म हो गया. The next time you come, you have to pay again. And you know, this is knowledge which stays with you for life. So if I'm getting a lifetime knowledge about my own body, क्या खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है, training कैसे करनी है, I think that's not a bad deal, is it? It's the best thing. It's the best knowledge one can have about their own body. और क्या चाहिए यार आपको? फिर एक दिन ट्रेनर सर पे ना भी हो, इतना आप सीख चुके होगे कि मैंने कितना खाना है, मैंने अपनी सेहत को किस तरह लेके चलना है. And if your health is not worth investing, then I don't know what is. तो ट्रेनर्स के साथ उनकी फ़ी पे सबको ही मशवरा है बहस ना किया करें, चुप करके पैसे दो और अपनी सेहत ठीक करो यार. तुम लोगों को एक तो मुझे कन्विंस कर लिया या गिल्टी कर दिया, I don't know which one it is, but it's working so far. Whatever way it works. Exactly. इवान पास्लोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग हमने पढ़ी थी याद है साइकोलॉजी में. तो दिस इज द सेम है. कुछ लोगों को प्यार से खींचना पड़ता है, कुछ लोगों को आपको थोड़ा सा जिद करके खींचना पड़ता है, लेकिन अगर उसमें उनका अपना ही फ़ायदा है सो बी इट है. कुछ प्यार से आप कहते हो यार ये आपके लिए ज़रूरी है, वो हाजिर है. कुछ नहीं आते, फिर आप उन्हें कहते हो ज़रा अल्ट्रासाउंड करके लाओ. वो अल्ट्रासाउंड करके लाते हैं, कहते हैं यार ये क्या ये तो हमें कुछ हो जाएगा. तो फिर आ जाओ ना यार, ठीक कर देते हैं. एवरीथिंग इज़ रिवर्सिबल टू अ significant margin, unless God forbid it is something terminal. Everything is, you know, pretty much manageable. Fixable. Yeah. Yes, it is reversible as well. Chale. Khair, thank you very much for being on the show, and this is a real eye opener for me at least. And yeah, thank you guys for watching, and yeah, please subscribe to our channel. Thank you very much.